Okay, well, welcome back, Tareen. Uh, Let me unmute you. Okay, welcome back, Tareen. So, Thank Tareen, you, you were sir. mentioning a difference. You were mentioning a difference between Ireland, Scotland, and Yes, England. sir. I did it vividly. Okay, so moving on from here, the England ruled over a lot many countries. So Yes, sir. even they were here in Pakistan and India, undivided Yes, India sir. and Pakistan, Commonwealth Bangladesh. countries. They are now called Yes. Commonwealth nations. So, yes, when they left these countries, a new Yes, sir. type of literature emerged after their departure. What is Yes, the sir. term that we use for that literature? Sir, post-colonial literature is referred to Yeah, that that's period. any favorite post-colonial book? Sir, I have read Heart of Darkness by Joseph Conrad, and long ago it was Lord Jim that really fascinated me. But I don't remember Lord Jim very greatly. Though Heart of Darkness and Chenua Achebe's Things Fall Apart, it was a very nice reading, very simple and Well, when we very talk, very nice. okay, you have mentioned Heart of Darkness by Joseph Conrad. Is Yes, it a sir. novel or novella? Sir, it is shorter than novella. So we may call it novella. Yes, sir. By the way, what was the nationality of Joseph Conrad? Sir, he was Polish. Are you sure about his nationality? Yes, sir. Okay, moving on from here. Yes, sir. Well, uh, when we move on, we have a very amazing factor that is Marlowe. Marlowe, What Christopher Marlowe, that sir. factor is basically, is it Christopher I Marlowe or think is Marlowe from Charles Heart of Marlowe? no, no, sir, sorry. It's from Heart of Darkness, Marlowe. He was the main character in that Hmm. novella, and he was a narrator also. There was a technique used in this literary piece, which was second narration, Hmm. second narrator, usage of second narrator. Once we find ourselves being told by the Hmm. second narrator, and the other time we are also communicated with the characters Agreed, by the help of agreed, Marlowe. agreed, agreed. Yes, sir. And Yeah, he this agreed. My question novella is, is a this masterpiece of novella, this. why this? All right, thank you. Why this novella is considered a critique on European colonial rule in Africa? Is it a criticism? If yes, then how? Yes, sir. Even Chenua Achebe wrote "Things Fall Apart" in response to such novella, and he said that not all the conditions and not all the plot that is being portrayed in the in novella and in that post-colonial literature is true. So he wrote "Things Fall Apart" in response to this novella. He didn't Well, agree with the well, my with the okay, all right, all right. My next question is that try to depict a difference between civilized people and savages. Yes, sir. This was the core of the Heart of Is, Darkness, is it in which true? Marlowe portrayed How? the character of Mr. Kurtz, who was apparently very modern and very civilized and very cultured, but inside his heart was made of darkness. And he was a very cruel man, and even his death was very gruesome, and even when we come across different characters in Lord Jim executed, and when he's being tortured and traumatized, the people there, those who are imposing these things on poor Lord Jim are actually Well, the fine enough. savage people, and Fair enough. yes, sir. Fair enough. Fair enough. Fair enough. The next
name that you have mentioned time and again is Things Fall Apart. Yes, sir. My question is about Things Fall Apart, writer Chenno Achebe. By the way, when this novel got published, Things Fall Apart? Sir, sorry, I don't know about the exact year, though I should have. Okay, alright. So Things Fall Apart is a colonial novel or it is pre-colonial novel? It's a colonial novel. Alright. So the next question is Yes, that sir. what is the nationality of Chenno Achebe? Sir, he was an African, Afro-Nigerian, Negro African, Nigerian. Oh yes, Yes, yes sir. he is. Yes he is. That's fine. So the Typical of title African Things race. Fall Apart. Yes, sir. You know from where the title Things Fall Apart has been taken? Sir, I don't know exactly the source, but Things Fall Apart is also a poem written by W.B. Yeats. So maybe there is some Okay. link between them, but I have I haven't I have no certified source that I can narrate here. But I think these two works are maybe they Are you are sure that there is inspired a from poem each by other. W.B. Yeats, Things Fall Apart, or The Second Coming is the name of the poem? So the Second Coming was written by T.S. Eliot, I think. All right. Second Coming has been written by T.S. Eliot. Okay, fair enough. Was the part? No, I I'm a little confused here, but I will work on it. No worries. Take your time. Okay. Okay, all right. We are skipping this. Eliot. T.S. Yes, Eliot sir. was a founder of a movement. You know what is the name of that movement? So the modern movement, it was founded by T.S. Eliot Oh, yes. after he started his work. A modernist or modernism, it began, So, it sprung what is up, the and definition of he modernism? collaborated with Ezra Pound. What is the Sir, definition of modernism is a modernism? very yes, sir. Sir, modernism is a very oblique and a very ambiguous Mm-hmm. movement filled with Mm-hmm. existentialism and Mm-hmm. such different and unique ideas that man has no meaning in this world, and he has to search for his existence. Well, last two And questions. it is a very difficult age indeed. It is very difficult even to understand and even to mark the years between modern and postmodernism. Okay, so There are quite conflicts we are going to regarding ask these some two. very easy questions, but Yes, that sir. will be a sort of rapid fire questions. Okay, Okay, sir. so Sure. you're not going to take more than some seconds. Like we are expecting that you will take Sure, maybe sir. 1 or 2 seconds. When Sure, sir. William Shakespeare was born? 1564, sir. Okay. When John Keats died? Um, uh, 1816? No, Fair enough. 1716. I don't. 1816, I Okay, think. all right. Who was the father of Queen Elizabeth? Queen Elizabeth, Sir George. All right. Okay. Who was working with T.S. Eliot as a partner? Ezra Pound. Fair enough. Ezra Good. Pound. The last question. When Christopher Yes, sir. Marlowe was stabbed? When Christopher Sir, at Marlowe the was age of stabbed? 28, he was stabbed in a brawl, and they didn't know that he was a man with such capacity, and they later mourned about it, but I don't know exactly. Okay, all right. At the age of So 28, he that's was stabbed in a brawl.
I'm poor Okay, at all right. learning and remembering So the dates and years, no but worries. I do know that. That was a wonderful session. So we are ending your Thank you, formal sir. interview here, Miss Perrin. Thank you, sir. Your mic will remain open. Okay, So sir. that was a wonderful interview. So हम अब जो है वो फॉर्मल डिस्कशन को खत्म करते हैं. मुझे गाइड कीजिएगा Yeah, कि sure, sir. हमें उन पहलुओं पर पहले बात करनी है जिन्हें हम इम्प्रूव करना चाहेंगे या जो अच्छा है उनको पहले हम बात करें. No, sir. The things that needs improvement. Thing that is you need improvement. I would love to know. सर आपको अब तक पता तो चल गया होगा कि मैं कितनी पैशनेट हूँ अपने इस इंटरव्यूज के मॉक सेशंस को लेके. चले अब मैं एक पहले दफा दे चुकी हूँ and I have उनके ऊपर requested you बात to करते हैं. and you have Thank you so agreed to much. my request. So I'm really thankful to you. thank you so much. We have just 8 minutes और मैं कोशिश करूंगा Yes, कि sir, अगर sure. हम इसमें मुकम्मल कर लें. अच्छा जी सर. इसमें सबसे पहले ये है कि दैट्स वेरी वेरी गुड. बल्कि हम जो है उन पॉइंट्स पर बात कर लें. कुछ चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. लाइक फेयर इनफ सरफेस लेवल पे यू आर एबल टू डिफाइन मॉडर्निज्म बट दैट्स नॉट फाइन. फेयर इनफ आपको पता होना चाहिए सेकंड कमिंग का जो है राइटर टीएस इलियट नहीं है. आपको ये पता होना चाहिए थिंग्स फॉल अपॉर्ट जो हैं वो एक पॉइंट जो डब्ल्यू.बी. लीड्स ने लिखी. ये क्वेश्चन हैं जो बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो आपको जो जी है सर. रैपिड फायर क्वेश्चंस में क्रिस्टोफर मान लो कि एज 28 इयर्स नहीं है. आप 29 बताया. आपने दोबारा से उसको गलत कर दिया. और इसके अलावा कुछ और बेसिक हमारे क्वेश्चन को भी शायद आप आंसर जो है वो नहीं देख. कोशिश कीजिएगा अपनी ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए. जिस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे पास थे जिनमें हम जो है वो थिंग्स फॉल अपार्ट में ये कहाँ से लिया गया. और इवन मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि इफ इट इज पॉसिबल इसमें से कुछ लाइंस को मेमोराइज कर लीजिएगा. ये आपने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉप ज्यादा किए. ये चीजें हैं जिन्हें हमें इम्प्रूव करना है कि हम ड्रॉप रेशियो कम कर सकें. Talking about the plus point overall from the very beginning, from the very first sentence, it was a well managed, well practiced interview. कुछ specific terms जो हैं उनको याद किया था and it was very visible कि इंटरव्यू को ठीक ठाक तरीके से टाइम दिया गया है. और इंटरव्यू की तमाम चीजों को जो क्वेश्चन से ऐसे लगता था कि यू नो वेरी वेल कि अगला क्वेश्चन क्या होगा. ठीक है. एंड यू आर टेकिंग अस इन दैट डायरेक्शन. टॉकिंग अबाउट हार्ट ऑफ डार्कनेस इस पे क्वेश्चन करते हुए हमें टाइम एंड अगेन ये लगा. और ये था कि आपने इसको भी प्रिपेयर किया हुआ है और आपने थिंग्स फॉल अपार्ट को भी ढंग से प्रिपेयर किया हुआ है शीना और शबे को. So overall, the grip on the subject was very well. Your confidence was very well. You spoke, माशाल्लाह, वो अनशेकन थी. वो एक बेहतर था आपका जो है वो कवर करना. और सबसे अच्छा ये था कि आपने अपने आंसर्स को काफी हद तक समराइज किया था. जो हमारी लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर ये था कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स दे रहे थे जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थे. तो गो के इंटरव्यू के अंदर कुछ डेट्स और कुछ ऐसी चीजें जो रैपिड फायर क्वेश्चन में थी वो गलत थी. लेकिन वो फिर भी उस तरह से मुतासिर नहीं कर सके इंटरव्यू को जो कि आपके ओवरऑल मैनेज करना था. कॉन्फिडेंस था. एक्सचेंज की तरह एक स्ट्रक्चर के साथ लेकर चले थे. तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू. और इसमें हम जो हैं अगर इसी इंटरव्यू के साथ जाते हैं तो हम जाएंगे. आवर स्कोर विल बी समवेयर मिनिमम हम 72 पे होंगे और मैक्सिमम हम शायद 74 तक जाएंगे अगर हम इस इंटरव्यू के साथ प्रेजेंट करते हैं. बट 74 तभी मुमकिन है इफ वी आर नॉट ड्रॉपिंग एनी क्वेश्चन. और अगर हम जो है वो क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करेंगे तो दैट विल बी समथिंग जो कि बहुत बेहतर रहेगा. सो गुड लक. इट वाज अ गुड इंटरव्यू. और अभी तक ये जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उनमें से सबसे अच्छा इंटरव्यू हमारा आज का था. आई एम श्योर दैट नेक्स्ट टाइम जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट हैं वो भी इंशाल्लाह इसी तरह से अपने इंटरव्यूज को प्रोसीड करेंगे. Credit goes to you and your team, sir. I'm very grateful. Thank you so much. Stay blessed. May Almighty Lord of Heavens bless you. Respected participants, thank you. आप अपना माइक बंद कर सकते हैं. पार्टिसिपेंट्स अभी से ऑनवर्ड जो है इंशाल्लाह जो अगले इंटरव्यूज का राउंड है आपका जो कि शुरू होगा नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह. उसमें आपको जो रीडिंग्स हमने रिक्वेस्ट की हुई है जो बुक्स की लिस्ट आपके पास है डेफिनेटली आप उन्हें देख रहे होंगे और देख चुके होंगे. आपने सारे लेक्चर्स को भी अटेंड कर लिया होगा. तब तक वी आर अज्यूमिंग कि कमीशन ने काफी लेट कर दिया इंटरव्यूज. जो रिजल्ट से हमारे अपने स्केड्यूल्स के मुताबिक जो हैं फर्स्ट वीक तक हम तो बहुत श्योर थे बट अनएक्सपेक्टेडली
कमीशन इज टेकिंग सम टाइम, बट मैथ का रिजल्ट आ गया, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 15 से आगे नहीं जाएगा, लेकिन कमीशन के सामने हमारी एक्सपेक्टेशंस ही चल सकती हैं। अगले इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सबको जो है वो उनका आंसर करना है, वो आपकी बुक्स में से जो पूछे गए क्वेश्चंस है। अभी तक तो आपने जितने हमने क्वेश्चंस शेयर किए हैं ये हिस्ट्री से शेयर किए हैं ना, आपके साथ जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं। फिर जो है हमारे पास ओथेलो से शुरू होगा, सॉरी हमारे पास जो है सोफोक्लीज का जो है इडिपस से शुरू होगा, और सारे के सारे हर एक एक राइटिंग्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं वो हमारे इंटरव्यूज में शामिल होते चले जाएंगे। So in this way we are going to cover all those books जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इनको आपने पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको चाहिए कि उनको जो है वो 2-2, 3-3 करके तैयार करना शुरू कर दीजिए अभी भी। तो नेक्स्ट वीक से वो भी क्वेश्चन शामिल होते चले जाएंगे कि ओथेलो से आपको क्या तैयार करना था, इससे क्या करना है, इससे क्या करना है, हर वर्क जो इम्पोर्टेंट है, और उसमें से जो प्रीवियस इंटरव्यूज के क्वेश्चन आए हैं हम उनके क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर करेंगे। अरूज आपके साथ शेयर नहीं किया गया, ये लिस्ट हमारे जो है वो कोई भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा। तहरीम अरूज के साथ ये लिस्ट शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है, जो आपके साथ शेयर की गई है। बाकी सबके साथ भी शेयर की गई है, बाय डिफॉल्ट आपके साथ भी की गई होगी वो लिस्ट जो है वो, ठीक है, आपके पास होगी, उसको देख लीजिएगा। So जी, thank you so much everyone. I'm sure that you are enjoying the session, and inshallah आपसे कल मुलाकात होती है and we are going to discuss all of that. Till then, take care of yourself and खुदा हाफिज़।